Good morning, everyone, and welcome to the class. Today, we will start the chapter 9 in history, and the name of the chapter is The Making of Regional Culture. So, in this chapter, we are going to deal with how regional cultures evolved, and in order to understand this, you must know the meaning of these two terms, regional and culture. Regional is related to a particular place, not it is not about the whole country, only a particular place is concerned. And culture is so many elements are there in culture, like our language we speak, our traditions, values, then the food we eat, the clothes we wear, uh, the festivals we celebrate. These all are elements of our culture. So uh, many times we describe people in terms of the language they speak. Their language becomes their identity. Many times we refer a person like a Tamil or an Odia. It means that if we are saying that a person is Tamil, it means that the person speaks Tamil and lives in Tamil Nadu, or the person speaks Odia and lives in Odisha. है ना? And we also see that each region has its own kind of food, own kind of clothes, poetry, dance, music, painting, है ना? So this is what regional culture. And sometimes we think that these whatever we are saying, जो भी culture के जो भी elements हैं, these all are existing from time immemorial. It seems to us, but actually the condition is not like this. है ना? We see that it evolves over a period of time. All the elements of culture evolves over a period of time, and we understand what we understand as regional culture at present is in the process of evolution, है ना? Intermixing with other cultures is going on, evolution is going on. So whatever we are experiencing today will today as a regional culture will not remain the same. It will keep changing. Okay, so now we will focus on the Cheras and the development of Malayalam, the language Malayalam, which is presently spoken in Kerala, which is in the southwestern part of the India. So we see how Chera kingdom of Mahodayapuram was established in the ninth century in southwest part of the peninsula, and that is Kerala. ठीक है? महोदयापुरम में चेरा किंगडम स्टैब्लिश हुआ था, वो वही आज का जो केरला है, दैट इज ओके. एंड ऐसा लगता है, इट इज नॉट एन established fact, but it seems that Malayalam was spoken in this area only. The rulers introduced the Malayalam language and script इन देयर इंस्क्रिप्शंस. जो यहाँ के महोदयापुरम के रूलर्स थे, उन्होंने जो जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, दैट इज रिटन इन मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. एंड ये दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट. पहली बार ये मलयालम जो है, जो कि एक रीजनल लैंग्वेज है, इसका यूज़ हो रहा है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखने में. जो इंस्क्रिप्शंस हम कह रहे हैं, जो रूलर्स इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, वो मलयालम में होता था. तो इट वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. And we see that Cheras were also influenced by Sanskritic tradition. So they were developing Malayalam language also, but they were very much influenced by Sanskritic tradition. And we see that in Kerala, the temple theatres
borrowed stories from the Sanskrit epics only. This was the impact of Sanskrit in Kerala. एंड जो मलयालम में जो पहला लिटरेरी वर्क हुआ, दैट वाज दैट हैपेंड इन द 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी में फर्स्ट लिटरेरी वर्क मलयालम में हुआ. एंड इसमें संस्कृत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है. और इसके बाद 14th सेंचुरी में एक जो लिटरेरी वर्क हुआ, दैट इज नेम्ड एज लीला तिलकम. ठीक है, लीला तिलकम. इस लीला तिलकम में बहुत सारे ग्रामर और पोएम से रिलेटेड बातें कही गई हैं. और इसका जो लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड मनी प्रवालम. मनी, मनी मीन्स डायमंड एंड प्रवाल मीन्स कोरल. सो मनी एंड प्रवाल, मनी डायमंड हुआ, प्रवाल कोरल हुआ. और तो यहाँ पर लैंग्वेज के टर्म में डायमंड इज संस्कृत एंड कोरल इज रीजनल लैंग्वेज. तो संस्कृत और मलयालम का जो मिला जुला रूप था वही मणि प्रवालम था, और उसमें लीला तिलकम नाम के टेक्स्ट को लिखा गया. ओके, एंड नाउ वी सी that regional culture grew around religious tradition. जो भी हम रीजनल कल्चर की बात कर रहे हैं, इसमें रिलीजियस ट्रेडिशंस वर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक तो लैंग्वेज का रोल हुआ, दूसरी रिलीजन वाज आल्सो देयर टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड the best example of this impact of religion on the culture we can see from the cult of Jagannath. Jagannath is a name for Vishnu, which literal meaning is Jagat ki Nath, है ना, Lord of the world. So this happened in Odisha, and Jagannath temple is there till present time. We find that temple is there, and the local tribal people, what they do, they make the wooden image of the deity, and then उनकी they worship them. So it seems कि है तो वो विष्णु के अवतार, लेकिन उनकी जो इमेज बन रही है वो वुडन इमेज में बन रही है और लोकल ट्राइबल पीपल बना रहे हैं. तो ये जो डेटी है, ओरिजिनली इट द डेटी वाज अ लोकल गॉड. लोकल गॉड मतलब उस जगह पर ही उनको उस फॉर्म में पूजा किया जाता था, और बाद में उनको विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया जाने लगा. ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 12th सेंचुरी में, इन द 12th सेंचुरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर था गंगा डायनेस्टी का. ठीक है, 12th सेंचुरी गंगा डायनेस्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर था. उसका नाम था अनंत वर्मन. तो अनंत वर्मन जो था, ही डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी. ठीक है, जगन्नाथ के लिए एक उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक टेम्पल बनाएंगे पुरी में, और इस तरह से टेम्पल बनता है. और उसके बाद 1230 में जब किंग अनंग भीमा रूल करते हैं, तो उन्होंने अपने किंगडम को डेटी को डेडिकेट कर दिया था, और अपने आप को क्या कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ, डेप्यूटी ऑफ द गॉड. इट मीन्स दैट द गॉड हैज सेंट मी to rule over the people, so that their miseries can be ended and they will become happy. So, this was the tradition which was started by King Ananga Bhima, that he dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. And we see that this temple gained very much importance as a center of pilgrimage, as a center of pilgrimage. Its authority in social and political matters also increased, क्योंकि मंदिर जो था वो पिलग्रिमेज का सेंटर बना हुआ था, तो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में भी इसके काफ़ी इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई. और जिसने भी उड़ीसा को कानकर किया, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, उन सब ने यही अटेम्प्ट किया कि उनका कंट्रोल
टेम्पल के ऊपर हो जाए, टेम्पल उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करने से उनका जो रूल है दैट विल बिकम एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया. And now we see about the Rajputs and the tradition of heroism. We find that the present day Rajasthan, that area was known as Rajputana by the British in the 19th century. Okay, Rajputana by the British in the 19th century. So, but it does not mean that this was an area which was inhabited only or mainly by Rajputs. It's not like that. In Rajputana, there were people who belonged to other caste also, and there were also several groups who identified themselves as Rajputs, but they were not living in that Rajputana or present day Rajasthan. You know, they were living in areas of northern and central India. So we find that राजपूताना कहलाता था वो, लेकिन इसका दोनों ही मतलब नहीं था कि राजपूत सिर्फ वहीं पे रहते थे, उसके अलावे भी राजपूत रहते थे कई जगहों पर, और ऐसे भी लोग थे जो राजपूत नहीं थे, वो वहाँ पर रहते थे. ठीक है. एंड नाउ वी विल सी दैट यहाँ का जो राजपूताना का जो कल्चरल ट्रेडिशन था वो बहुत ही रिच था. जैसे कि हम देखते हैं कि 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो आज का राजस्थान है दैट वाज रूल्ड बाय राजपूत फैमिलीज ओनली, जिसमें कि एक ऐसा ही रूलर था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, है ना. ही रूल्ड ओवर दिस राजपूताना, इसके जो एक किंगडम पे उनका रूल था. एंड ये जो रूलर्स थे इन्होंने दे चेरिश द आइडियल ऑफ हीरो हु फॉट वैलियंटली, बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़ना. ये हीरो थे, देवर हीरोज. हीरो हम किसको कहते हैं? हीरो वो होता है जो सबसे हटके काम करे, है ना. बाकी लोग जो कर रहे हैं उनके हिसाब उनके तरह से नहीं, बल्कि वो अपने तरीके से काम करे. तो ये देवर द रियल हीरोज who fought so bravely, who fought so valiantly with the British, and they wanted to 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 die rather than to be defeated. अगर उनके सामने ये ऑप्शन होता कि आपको यू वांट टू लिव और you want to die or defeated, then they must choose die. डिफीट होके जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, है ना. सो दिस वाज देयर story of bravery, and we find that there were so many stories about Rajput heroes, and these were recorded in poems and songs, and these were recited by many trained minstrels who were there in the court फॉर दिस पर्पस ओनली. रिसाइट करने के लिए ही उनको रखा जाता था. तो ये जो मेंस्ट्रुअल्स थे वो हीरो की मेमोरी को प्रिजर्व करके रखते थे. और एक तो जब वो रिसाइट कर रहे हैं तो हीरो की मेमोरी जो है वो तो प्रिजर्व होती जा रही है, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि इट वाज इंस्पिरेशन. these songs, these poems were an inspiration for others to follow their example, है ना. So this was this we find, and ordinary people also were also attracted by these story, which often depicted dramatic situation and a range of strong emotions, है ना. loyalty, friendship, love, valor, anger. तो ये जो सॉन्ग्स गाते थे उसमें सारा कुछ आ जाता था, और इसलिए लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. And now we see ki what was the condition of women during this 19th century in Rajputana. So we find that sometimes they became the cause for conflict between two rulers. They fought with one another to either to win the female or to protect her, है ना. So women जो है
उनके लिए लड़ाइयाँ भी होती थी, जैसे आपने हो सकता है आपने पढ़ा हो, जैसे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच की लड़ाई। और कई बार जो वुमेन थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। सो ये तो एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये कि वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग their heroic husband in both life and death. The husbands were hero. Why? Because they they preferred to die rather than to be defeated. And the moment the women, the wives, get this news that their husband is died in the battlefield, they were ready to immolate themselves, है ना? They were ready to immolate themselves. That is known as the practice of sati, है ना? वो बिल्कुल उसके लिए तैयार रहती थी कि जैसे ही हस्बैंड की उस तरह की कोई बात होगी, न्यूज़ आएगी, वो सती हो जाएंगी, है ना? So this was the way through which they showed their bravery. The women were also brave. It is not easy to jump in the fire, but वो कर जाती थी, है ना? Okay, and now we see the story of Kathak. So we see that dance is also an important element of culture, and now we will discuss only about history of one of the dance form, that is Kathak. And we see that this Kathak dance belongs to North India, and the term Kathak is derived from Katha. Katha means story, which is used in the Sanskrit language, and Katha is main word, उसी से कथक बना है. And कथक्स जो होते थे, they were originally a caste of storyteller who used to tell stories in temples of North India. And not only this, it's not that they only told the stories, they also performed with their gestures and songs, है ना? वो हाथों के gesture से, song से perform भी करते थे. एंड वी फाइंड दैट एक बहुत ही अलग तरह के डांस फॉर्म में ये इवॉल्व करने लगा 15th और 16th सेंचुरी से, जबकि भक्ति मूवमेंट स्प्रेड करता है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट के साथ भजन होने लगे, सॉन्ग्स होने लगे, पोएम्स होने लगे, और डांस भी होने लगा, है ना? सो राधा कृष्ण के जो लेजेंड्स हैं उसको फोक प्लेस के थ्रू दिखाया गया है, लाइक जिसको हम कहते हैं रास लीला, है ना? सो द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्ण वर इनैक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रास लीला. एंड रास लीला में हम क्या देखते हैं कि फोक डांस को बेसिक जेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर के साथ कंबाइन किया गया है ना? फोक डांस ही है, बट उसके साथ में कथक के जो हाथों के जो जेस्चर्स होते हैं बेसिक, उसको भी इंक्लूड किया गया है. ठीक है. और कथक जो है, मुगल एम्परर्स के समय में कथक को काफ़ी प्रोटेक्शन मिला, पैट्रोनेज मिला, एंड इट वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट. कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था, एंड धीरे धीरे कोर्ट में परफॉर्म होते होते इसने अपने आज के फीचर्स को पाया. एंड इसकी स्टाइल बिल्कुल ही डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, और ये दो ट्रेडिशन में ये डेवलप करता है. वन इज कॉल्ड one in the courts of Rajasthan and the other in the Lucknow. These are two घरानाज of कथक. ठीक है. सो वाजिद अली शाह ने पैट्रोनेज दिया कथक डांस को, who was the Wajid Ali Shah, who was the last Nawab of Awadh, and with this support from Wajid Ali Shah, the dance grew into a major art form. And we find that by third quarter of the 19th century, it was established as a dance form, not only in Lucknow and Rajasthan, but also in so many areas like present day Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Bihar, Madhya Pradesh. Okay, तो ये चीज़ें हो जाती हैं. This is important. Third quarter of the 19th century,
it was firmly established as a डांस फॉर्म. ठीक है. और फिर वी सी दैट emphasis was laid on intricate and rapid footwork. अब जो कथक हो रहा है उसमें बहुत ही intricate, complex और rapid footwork होता है, elaborate costumes होते हैं, and enactment of stories होते हैं. बहुत सारी stories सुनाई जाती है through this डांस फॉर्म. ठीक है. और कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो इसको नापसंद करते थे. ठीक है. इन द 19th एंड 20th सेंचुरी फिर भी कथक ने अपने आप को बचा के रखा और सरवाइव कर जाता है ये. और फिर हम देखते हैं कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इन द country. Okay, so this is all for today. We will continue in the next class.